यहाँ पर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं, और जब भी ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ करते हैं तो करंट कलेक्टर से इमीटर की तरफ पास नहीं होता है, और ये तब तक पास नहीं होता है जब तक बेस में माइक्रो एम्पियर में करंट ना पास हो। यानी हम बेस को कंट्रोल करके मेन सर्किट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही टेक्निक यूज़ करके इस प्रोजेक्ट में वाटर का यूज़ करके बेस वाले साइड को सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, और जब भी बेस में करंट जाएगा हम ट्रांजिस्टर में कलेक्टर से इमीटर की तरफ इजीली करंट फ्लो होने देगा और एलईडी ग्लो होने लगेगी। और जब जब टैंक में वाटर का लेवल ऊपर जाएगा तो अलग अलग बेस वाला सर्किट कंप्लीट होगा और अलग अलग एलईडी ग्लो होने लगेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि टैंक फुल हो गया है।